Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study our modern novelist Joseph Conrad. As I have discussed or told you earlier that after E.M. Forster this is the last modern novelist which we have to study, Joseph Conrad. Joseph Conrad was born in 1857 and died in 1924. Chief among those who used technique of Henry James was Conrad Apol, who wrote exquisite English. He was gifted with great love for his fellow creatures, and through it he acquired an unusual insight in all that was going on around him. Being a sailor, he spent 20 years of strenuous life in the ship or the port. All this experience revealed to him one central problem of human nature, that is the tension between our higher and lower selves. As his own sailor's life provided him with the memory of mistakes, humiliations, and corrections under authority, he took a sort of morbid interest in people whose souls are harassed and tormented by others. Moreover, as a sailor learns the histories of the people at second hand in hotels, clubs, etc., Conrad developed the plots of his novels through a third person, as if in conversion, in which the voice and personality of the narrator becomes extremely suggestive quite apart from the story is telling. Yes, my dear students, this was the first passage. अब वो कहा क्या जा रहा है कि चीफ अमंग दोज हु यूज टेक्निक ऑफ हेनरी जेम्स वाज कॉनरैड, के हेनरी जेम्स की जो टेक्निक है उनको यूज़ करने में सबसे बड़े राइटर जो है कॉनरैड हैं. पॉल हु रोट एग्जीक्यूजिट इंग्लिश, जो इंतहाई आला इंतहाई नफीस इंग्लिश यूज़ करते थे, एग्जैक्ट जिसको बोला जाता है. ही वॉज गिफ्टेड विद ग्रेट लव फॉर हिज फेलो क्रिएचर, अपने जो साथी हैं उनके साथ भी वो बहुत मोहब्बत रखते थे. एंड थ्रू इट, और इसके ज़रिए ही एक्वायर्ड एन अनयूजुअल इंसाइट इन ऑल दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम. तो इसी वजह से उनके अंदर एक ऐसी जो है इंसाइट, बसीरत पैदा हुई इन ऑल दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम, जो उनके इर्द गिर्द हो रहा होता उन्हें उस बारे में मालूम होता. बीइंग अ सेलर ही स्पेंट 20 years ऑफ स्टर्नियस लाइफ इन द शिप और द पोर्ट. अब मल्लाह के तौर पर उन्होंने अपनी जवानी के 20 साल जो है वो जो है बहरी जहाज़ या बंदरगाह पर गुजारे. All this experience revealed to him one central problem of human nature. अब ये जो 20 साल उसने गुजारे हैं, इसमें उन्हें एक इंसानी जो है वो प्रॉब्लम, इंसानी फितरत का मसला, सेंट्रल प्रॉब्लम समझ में आया. दैट इज़ द टेंशन बिटवीन आवर हायर एंड लोअर सेल्व्स. और वो क्या था? वो ये मसला था कि टेंशन बिटवीन हायर एंड लोअर सेल्व्स, अपर क्लास और लोअर क्लास में जो टेंशन है, जो तजाद है, जो झगड़ा है, जो डिफरेंस है. As his own sailor's life provided with him the memory of mistakes. अब अपनी ही उसकी जो सेलर लाइफ थी, मल्लाह की ज़िंदगी थी, वो उसे मुहैया करती थी क्या? द मेमोरी ऑफ मिस्टेक्स, कि उससे कुछ गलतियाँ हुई उसको याद करता था. ह्यूमिलिटेशन, तजलील होना, एंड करेक्शन अंडर अथॉरिटी, और किसी के हुक्म के नीचे जो है वो अपने आप को तस्सीह में लाना, सही करना. He took a sort of morbid interest in people whose souls are harassed and tormented by others.
अब वो कहा जा रहा है ही टुक अ सॉर्ट ऑफ मॉर्बिड इंटरेस्ट, इंतहाई दिलचस्पी लेते थे इन द पीपल, उन लोगों में हु सोल्स आर हरास्ड एंड टॉर्मेंटेड बाय द अदर, जिन्हें जो है हरास किया जाता था या दूसरों की तरफ से तजलील का निशाना बनाया जाता था. Moreover, as a sailor learns the histories of the people at second hand in hotels and clubs, Conrad developed the plots of his novels through a third person as if in conversation. तो अपनी गुफ्तगू में वो जो अपने प्लेज में जो प्लॉट डेवलप करते थे तो वो थर्ड पर्सन नरेशन में नरेट करते थे, in which the voice and the personality of the narrator becomes extremely suggestive, quite apart from the story he is telling. Conrad was influenced by Henry James' artistic rectitude and psychology's subtlety. He learned the attitude of detachment and an acute observation of environment from French novelists Flaubert and Maupassant, from Turgenev and Dostoevsky. Conrad imbibed a cosmopolitan outlook and also a love for portraying characters who are in conflict with themselves, who are frustrated by their own passions and impulses, and who on account of having missed their life purpose become introverts and find their only outlet in crime. जी तो स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि कॉनराड जो है वाज इन्फ्लुएंस बाय हेनरी जेम्स, वो हेनरी जेम्स से इन्फ्लुएंस हुआ उसकी किस बात से, आर्टिस्टिक रेक्टिट्यूड एंड साइकोलॉजिकल सबटेलिटी, यानी कि उसकी नफ्सियाती इस्तेहकाम और जो उनका फ़नकाराना इस्तेमाल था, फ़नकाराना सलाहियतें थी. रेक्टिट्यूड मीन उसकी कैपेबिलिटीज़. ही लर्न द एटीट्यूड ऑफ डिटैचमेंट एंड an acute observation of environment from the French novelist. तो फ्रेंच नॉवलिस्ट जिनमें फ्लबर्ट और माओपेजेंट आते हैं, इनसे उसने acute observation हासिल की इन्वायरमेंट के बारे में. फ्रॉम टर्जेनव एंड डोस्टोव्स्की, कॉनराड imbibed a cosmopolitan outlook. उन्होंने जो चीज़ों को गहरी नज़र से देखना जो है वो सीखा. एंड ऑल्सो अ लव फॉर पोर्ट्रेइंग करेक्टर्स, और करेक्टर्स को पोर्ट्रे करना, उनको पेश करना, हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद देमसेल्व्स, जो अपने अंदर तजाद रखते हैं, उनको बड़े खूबसूरती से बयान करना इसने सीखा. हु आर फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर ओन पैशन एंड इम्पल्सेस, जो अपने ही पैशन से फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं. एंड हु ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग मिस्ड देयर लाइफ पर्पस बिकम इंट्रोवर्ट्स एंड फाइंड देयर ओनली आउटलेट इन क्राइम. बट अनलाइक दीज ग्रेट नॉवलिस्ट्स, Conrad had neither the experience nor the opportunity to examine such characters as social types or psychological puzzles. His imagination thrived on glimpses which suggested a mystery. For example, Lord Jim, hero of the novel of the same name, seems to feel himself always under a cloud. Yes, dear students, the next phase of our remaining assignment. The themes of Conrad's novel transcends temporary and material interest. Unlike some of the contemporary novelists, he succumbed to expose social abuses or laugh at social prejudices. He lived on his past, which on account of the lapse of years invoked in him
nobler qualities, especially his capacity for the intellectual sympathy and the single-heartedness. He was thus always true to himself and to the characters he created. The masterpieces of the Conrad are The Nigger of the Narcissus, that was published in 1898, Lord Jim 1900, Typhon, that was published in 1902, Nostromo, that was published in 1904. These series cover an immense range of human activity. Yes dear students, तो यहाँ पर हमें उनकी कुछ नॉवेल्स के बारे में पता चला है और उसके पहले पैसेज में हमें थीम के बारे में पता चला है। तो जो कॉनराड अपने नॉवेल्स में थीम यूज़ किया करता था वो जो है टेम्परेरी और मटेरियल इंटरेस्ट को शो करते थे, उनको तब्दील करते थे। अनलाइक सम ऑफ द कंटेम्परेरी नॉवलिस्ट ही सकोन्ड टू एक्सपोज सोशल अब्यूजेस और लाफ एट सोशल प्रेजुडिसेस, यानी कि अब कुछ ऐसे थे नॉवलिस्ट जो इनके बरअक्स उसने क्या किया था, ही सकोन्ड टू एक्सपोज सोशल अब्यूजेस, उसने सोशल अब्यूजेस को जो है वो स्कॉन किया था, एक्सपोज करने के लिए उसे यूज़ किया था, और लाफ एट सोशल प्रेजुडिसेस। ही लिव्ड ऑन हिज पास्ट, माजी में रहता था, विच ऑन अकाउंट ऑफ द लैप्स ऑफ ईयर्स इन्वॉल्व्ड इन हिम द नॉबलर क्वालिटीज़, उसने जिस चीज़ ने उसकी क्वालिटीज़ को बेहतर किया, स्पेशली हिज कैपेसिटी फॉर इंटेलेक्चुअल सिंपैथी एंड सिंगल हार्टेडनेस। He was thus always true to himself and to the characters he created. तो उसके बाद मास्टरपीसेस आ रहे हैं जिनमें द नाइगर ऑफ द नार्सिसस, लॉर्ड जिम, टाइफोन, नोस्ट्रोमो. These series cover an immense range of human activity. We have in them man's conflict with the internal sea, his avarice for fabulous wealth in a mine, and tribal wars between savages. The characters in them are not refined or fashionable people. They become slaves to their peculiar idiosyncrasies. They have tormented souls, often bordered on tragedy. Conrad's greatest merit in these novels lies in his descriptive power, by which he, like Milton, can make us see the unseen as he can see it. The result is that the readers get an impression that the scenes are described by one who knows how things happen in modern world, and this gives a touch of realism to the stories. Moreover, Conrad in all his novels exhibit the great ideals of impartiality, practical wisdom, sense of fitness, and freedom sentimentality, which earned for him the admiration of his English readers. Yes, dear students, after discussing some masterpieces, the writer discussed about the characters in them. Their novels are not refined and fashionable people, यानी कि वो जो किरदार यूज़ करता था वो कोई रिफाइन और फैशनेबल पीपल नहीं होते थे. दे बिकम स्लेव टू देयर पिक्यूलियर आइडियोसेंसेस. तो वो क्या करते थे, वो अपने जो आइडियलिज्म थे, अपने जो किरदार थे, उनके ही स्लेव्स हो जाते थे. दे हैव टॉर्मेंटेड सोल्स थे वो, ऑफन बॉर्डर्ड ऑन ट्रेजेडी, और अक्सर वो ट्रेजेडी के जो है दहाने पर होते थे. कॉनराड्स ग्रेटेस्ट मेरिट इन दीज नॉवल लाइज इन हिज डिस्क्रिप्टिव पावर, उसकी बयानिया ताकत थी, बाय विच ही लाइक मिल्टन कैन सी,
कैन मेक अस सी ऑफ द अनसीन, जो कि हमें दिखा सकता था कि जैसे कि कैन मेक अस सी, वो हमें दिखा सकते थे द अनसीन, ऐसी चीज़ें जो देखी नहीं जा सकती, ऐसी कैन सी इट, और लेकिन वो उसे देख सकता था, बयान कर सकता था. द रिजल्ट इज़ दैट द रीडर्स कैन गेट एन इम्प्रेशन, तो रीडर को एक तासर हासिल हुआ दैट द सीन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वन who knows how things happen in the modern world, एक ऐसी चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड में होती हैं. एंड दिस गिव्स अ टच ऑफ रियलिज्म टू द स्टोरीज, और इस चीज़ ने उसकी स्टोरीज़ को रियलिज्म का टच दिया. मोreover Conrad, all his novels exhibit the great ideals of impressionability, practical wisdom, sense of fitness, freedom, sentimentality. These are the things which earned for him the admiration of his English readers. So dear students, this is Joseph Conrad. With the end of this assignment, we have covered our modern era or postmodern era. Now we have to do only two theories: surrealism, naturalism, and I think Marxism. I hope from Monday physical classes are going to be started, so we will meet or we will see with another topic on Monday, inshallah. Allah Hafiz, Allah Nigewan.